So, good morning, students. Good morning, students. So, let's start with today's class. जिसमें हम सीखेंगे mostly. One second. Let me check if I am audible. Yes, I am audible. Cool. Okay. So, हम practice. So, I have pushed these notes just few minutes back, and I have posted the link of these notes, like basically यहाँ पर I have pushed all the changes जो भी notes है वो and similarly on the YouTube also you will get the recording, so you know where to find the recording. Basically I have already given you the uh, channel's link, so actually you can access directly if I don't share the uh, what I don't share if I don't share the link in the group. Okay, so let's start with today's lecture. So quickly practicing what we have learned. So initially we have started this OOPS concept, that is object oriented programming in Python. Okay, in Python. So we can say in Python. Okay, because in Python, uh, like it can be in Java also, C++ also. So this OOPS concept basically works in almost each language, right? Almost each basically the traditional old languages, just like Python is one of it. So similarly, so how we have seen all these things is first is we have seen, so there are these mm, there are these classes और उसके अंदर हम functions लिखते हैं, so we call this entire thing a, so इसको क्लास कहेंगे, राइट? इसके अंदर ये मेथड्स है या फंक्शंस कह लो या ऑब्जेक्ट्स कह लो, ठीक है? सो लेट्स से कार मैन्युफैक्चरिंग बीइंग अ वन बिग, है ना, बी एम सी या BMW, और उसके अंदर ये सेक्शंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट कैन बी इंजन, व्हील एंड बॉडी. So you can access these information using like these, ठीक है, like this. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग से इंजन के अंदर क्या चल रहा है, इफ यू वांट टू नो यू कैन make it know like this: car manufacturing, then engine, so you'll get what is there, right? Then similarly we have seen the same thing for net banking. Here, if you want to know what is happening inside a net banking, so this is a class और इसके ये ऑब्जेक्ट है. लाइक इसका हमने दो चीज सीखा, एक चीज सीखी थी. what was it? There can be one object, उसका एक डेटा रहेगा, ठीक है, डेटा रहेगा, और एक रहेगा प्रॉपर्टीज या फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इफ यू से वॉच, ठीक है, वॉच बीइंग एन ऑब्जेक्ट, तो वॉच का डेटा क्या रहेगा, व्हाट इज द ब्रांड नेम, राइट? व्हाट इज द ब्रांड नेम, और what's its color, right? What's its dial type, whether it is square or round, right? But how about functions? Functions can be uh, the rotation of, right, rotation of the dial और rotation of the hands. क्लॉक के अंदर जो hands होते हैं ना, these hands जो कुछ hourly hand होते हैं, minute होते हैं hand होते हैं, second hand होते हैं, rotation of hands. Then date, है ना, date can also be shown. These kind of things can be lies under the function, okay? And the data can be lies under the like this brand color or town, it can be lie under the data, okay? So basically this class or entirely this object has either some data or some functions. Okay, so this is the data. These are the functions. Like these can be things can be found in a object. Okay, in an object. So we have seen this how to access these objects, that also we have seen. So if I want to access a transaction, what I will say net banking.
नेट बैंकिंग, उसके बाद ट्रांजैक्शन लिख दूंगा, ठीक है। एंड देन व्हेन आई रन दिस लाइक दिस, नेट बैंकिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट आई कैन यूज एनीवेयर, ठीक है। So if I say net banking dot transactions, so I will get the transaction, whatever the transaction has been happened, right? Like this. Let me just show you. Net, so ये सब चलाना होगा मुझे. This has been done. Object has been created. Then net banking, उसके बाद dot डाल देंगे and then transaction. If I say this, if I run this, I will get what? This. Published data. So I have stored a string here. Okay? That's how I got this transaction. And similarly, that's how I got this user details. Okay, going ahead, then we have seen there are four pillars of books. Okay, one of the most right it is. तो हम आज सीखेंगे उसमें से inheritance. ठीक है, inheritance we will learn. So inheritance again has some types. तो वो भी हम सीखेंगे. Going ahead, we will learn the other ones. We have seen what is self. So self is one parameter that is very much common. Like ये लिखा ही जाता है. Whenever you create a class, you write the self. Okay. And what is used to do? So it is used to bind the methods to the class. Okay, the methods to the class. And so here also what we have done, we have created a class, we have created some functions. उसके अंदर कुछ हमने रिटर्न कर दिया है. And then we are calling this. So सबसे पहले I have created an object and I have stored these methods inside this object, and this object now I'm using this object to call any method. Calc dot addition, calc dot multiplication can be done for the subtraction similarly. Okay, then going ahead, we have seen some types of variables. Okay, some types of variables. So first is this. So this is also a global variable which can be used entire for any any method, right? It is also called as class variable or also called as static variable. Okay. It is also called as class variable, also called as static variable. After that, we have seen these. We have already seen these. Self dot a equals to a, self dot b equals to b, self dot c equals to c. If someone is failing to understand this, remember this. If you don't really understand this, you'll get eventually understood. Like, because we will repeat all these things so many times that you will eventually understand this. Okay. So these variables are called as instance variables. So whichever variable which is defined inside a method is called as instance variable, or you can also kind of consider this as a local variable. ठीक है, लोकल वेरिएबल जो हमने सीखा था ना, उस तरीके से, क्योंकि दीज आर यूज्ड इनसाइड लोकली इस मेथड के अंदर. और सिंस वी हैव दिस सेल्फ रेफरेंस, सो वी कैन यूज एनीवेयर. देन वी हैव सीन दीज डिफॉल्ट, यहाँ पर हमने नहीं लिया है. वन सेकंड. So yes, where I was. Yeah. So this is a class variable, instance variable, and default variable. Let me show you. Yeah, these are called default variables. Okay. Default means the variable which we are passing inside a method. Like we know these values already. That's why we are like passing this as a default variable. So this is how. Okay. Going ahead, then we have seen this class constructor. Okay, so this is again the thing that we will be going to use very often.
So constructor is something that you will be creating very often, very often. So the difference that we have seen is like this. So first we have created a class using this car, and uske andar then we have only added this simple method. Okay, and when I wanted to call this car class, then I stored the class in an object, and uske baad I'm calling this like this, and I'm getting the type of a function, type of a car, that is like type of engine, which is real. Okay. Similarly, you can also do the same using constructor. Okay. So it is ideal to have created a constructor in a method. Okay. So whenever you run this method or a class, whenever you run this class, दिस इनिट मेथड ऑल लाइक इटसेल्फ ये चल जाएगा. ठीक है. अगर तुमने इसको कॉल कर लिया लाइक दिस, इस ये ऐसा होता है. ठीक है. इसको भी कॉल कर दिया तो ये तो चल जाएगा. ठीक है. हम इनको बुलाना पड़ता है. ठीक है. लाइक दिस कार डॉट इंजन, दिस इज ऑटोमेटिकली रन वेन एवर यू कॉल अ क्लास, क्लास को कॉल करोगे, दिस इज ऑटोमेटिकली रन. इनको इनके नाम से बुलाना पड़ता है. ठीक है. So that's why it is called as constructor and not a function. जैसे इसको function बोला जाता है, right? Function या method बोला जाता है. उस तरीके से इसको constructor बोला जाता है, इसको method नहीं बोला जाता है, right? So how to write this? How to write this? First is you need to understand like what type of variables that we need. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर मुझे engine का type variable चाहिए था. So I created def init सेल्फ कॉमा इंजन टाइप, और उसके बाद सेल्फ इंजन टाइप इक्वल्स टू इंजन. ठीक है. अगर मैं इसको ए कर दूं इसको, तो इसको मैं सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू ए ऐसे भी बोल सकता हूँ. ठीक है. तो इट इज जस्ट अ वेरिएबल. इट इज जस्ट अ वेरिएबल. देन yeah, it is just a variable. Then you can use this variable in inside like this entire class. इसके अंदर जितने भी मेथड आप यूज करोगे उसके अंदर ये वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी वैल्यू वी आर पासिंग this this v6 or v8, you can use it anywhere like this. So when you call this car object dot engine, you see you got engine is created and v6 is this variable which is इसके अंदर जाएगा फर्स्ट एंड देन इसके अंदर आएगा. ठीक है. देन सिमिलरली वी हैव सीन वन मोर एग्जांपल जिसमें अगेन लाइक कुछ इस तरीके से ही लिखना सीख लो. ठीक है. ये वाला भूल जाओ अभी, ये वाला भूल जाओ. ऑलवेज वी विल राइट लाइक दिस, ऑलवेज वी विल राइट लाइक दिस, जिसमें व्हाट वी विल सी, व्हाट वी विल डू, वी विल से class equals to sum of like some class. ठीक है. Class equals to some class that is capital C college, and then उसके अंदर we will see what variables that I want. So I want variable 1, variable 2. What I have said, def init. So this is a constructor. I have said def self dot variable 1, self variable 2 equals to variable 2, and ये print statement डाल दिया. So whenever you run any method, इसको रन कर लो, इसको रन कर लो, किसको भी रन कर लो, this will run automatically. Okay, this will run automatically. So I have called here only display. So you can see def object, ये कॉलेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डाल दिया, जॉन एंड दो सम नेम डाल दिया मैंने, एंड देन व्हेन आई सेट कॉलेज ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले दिस वन. ओके. कॉलेज कॉलेज ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, मतलब ये ऐसे कॉल करा, कॉलेज ऑब्जेक्ट dot display, then you should have printed only this one, but you can see constructor is called, then display method is also called. Okay, like this. So anything, so whichever class you run, you will automatically see the init constructor will also run like this. Constructor is called. Okay. So if you can also make a reference of these like जो भी वेरिएबल है ना, इनको भी आप रेफरेंस ले सकते हो लाइक दिस. जैसे इसमें मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट var, सेल्फ डॉट var2. ठीक है. कुछ इस तरीके से इफ आई रन दिस,
इसमें मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ये दो चीजों को कॉल कर दिया, ये दो चीजों को, एंड आई यूज दिस एफ स्ट्रिंग। तो इफ यू नो, लाइक ये जो हमने प्रिंट डिस्प्ले वाला क्लास लिया था, here I have extended this using of f string. Okay, if I run this now, you can see display method is called and the variable name is self variable one, self variable two. ठीक है, जॉन एंड रो कहाँ से आएगी, यहाँ से, कहाँ से आए, यहाँ से आए। इस क्लास के अंदर मैंने ये दो वेरिएबल डिफाइन करे जो यहाँ पर गए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, एंड देन ये यहाँ पर यूज करें मैंने सेल्फ डॉट, इनको ये बस डिक्लेरेशन है, जैसे हम एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, राइट। जैसे कुछ भी लिख लो, लाइक वेरिएबल इक्वल्स टू सम डेटा, राइट, सम डेटा, इट इज सिमिलर। बस मैं यहाँ पर क्या करूँ, आई एम सेइंग सेल्फ डॉट वेरिएबल, एंड इस डेटा को भी मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ इसी को। वाई, बिकॉज इन द फ्यूचर आई विल पास दीज वेरिएबल्स थ्रू, आई विल पास दीज वेरिएबल्स टू क्लास, क्लास के अंदर मैं वेरिएबल पास करूंगा, एंड डोंट देन दिस सेम वेरिएबल विल कम हियर, और फिर इसको रेफरेंस पे क्या, यू कैन यूज इट एनीवेयर, ये सेम मैं यहाँ पर लिख लिया, राइट। बेसिकली यही वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज द थिंग। तो आप कहोगे, विल से कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स, डायरेक्टली यूज कर लो यहाँ पर इफ यू ऑलरेडी नो, बट दीज आर प्लेस होल्डर्स, ये प्लेस होल्डर है, लाइक यू कैन चेंज यहाँ पर अमित लिख दो, है ना, अमित, अमित झा, 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 okay, अमित झा लिख दो, so you can change any name, you can change any name, you will get any name change, right, like this. So basically this is how you can do it. Like यहाँ पर अगर मैंने डायरेक्टली अमित एंड झा लिख दिया, तो नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू चेंज द नेम, I will not be able to change the name, right? I will not able to change the name. So going ahead, so we will try to write the function or classes using constructor always. Okay. So here also another example I've given college and display. Display means I wanted to show the college name and the location. So I needed these two variables. What I have said कि एक init function create कर लो, उसके अंदर name and location डाल दो, तो name equals to name, location equals to location, और ये self is only for binding, ठीक है। तो ये name equals to name क्यों बोल दिया, क्योंकि ये name ये reference ले ले और location ये reference ले ले, और फिर ये name and location में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, बस मैंने इसको self के साथ बाइंड कर दिया, so that I can use it in any, like यहाँ पर एक मेथड रहती है, हर एक मेथड में I could have used it, okay, I could have used it. So that is how we can do it. The next thing is, um, next thing is ये हमने ये गलत है. So we have also seen for the stocks. ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या किया, क्रिएट एक स्टॉक्स नाम से क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर आई हैव एडेड दिस कंस्ट्रक्टर, इनिट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर आई हैव एडेड stock name equals to stock name and price, stock price equals to stock price. I have bind it with a self so that I can use this anywhere, ठीक है। then I have created a utility, इसको utility भी कहा जाता है guys, ठीक है, utility, utility method कह लो या functions कह लो या methods कह लो, ठीक है, methods कह लो, ठीक है, या मेथड या यूटिलिटी मेथड, दीज आर सेम, ठीक है। तो मोस्टली बहुत लोग तो यूटिलिटी मेथड करते हैं देयर। so now if you want, you created this and you wanted to print the stock name and stock price, ठीक है, what is stock name, this self the stock name। तो इस क्लास में जो भी वैल्यू आप पास करोगे इस डिस्प्ले में वो दिखेगी। तो फर्स्ट थिंग आई विल से लेट्स से S1 नाम से जो स्टॉक है, इट इज देयर, है, इसको मैं S2 कर देता हूँ, इसको मैं S3 कर देता हूँ, माइनस, इसको मैं S4
S4 कर देता हूँ, इसको मैं S5 कर देता हूँ. So what I have done here? So I have created a object. ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने स्टॉक्स को लिया और उसके अंदर मैंने स्टॉक्स की प्राइस डाल दिया. एक है स्टॉक में डाल दिया, स्टॉक प्राइस डाल दिया. ठीक है. So now if I run this, it has been run. So now if I say s1 dot display, ठीक है, s1 dot display, s1 dot display बोलते हैं, ठीक है, s1 मतलब stock dot display. So I should get this, right? So if I run this, I will get Reliance and like stock name equals to Reliance, that is this, and stock price equals to 2500. Okay. Similarly, if I say s2 dot display, ठीक है, and if I run this, I will get these TCS and T500. Okay, TCS and T500. So what we can learn here? So whenever you create an object, you can pass different details, different data. Okay, different data. So if I want to know what is the पांचवा जो stock है, what is the price or what is the name, I can simply say S5. Yeah, S5 equals to 5 dot display, and if I run this, I should get whatever the fifth stock is. Okay, fifth stock is HDFC, and the price is this. This is the fifth stock. HDFC and price is this. Okay, so this is how you can create a different object and pass a different, like we have created different objects and pass the different data. Okay, created different objects, pass the different data, right? Everyone is getting this. Everyone is getting this. Right? Yes, yes, type yes, type yes if you are getting this. Type yes if you are getting this. And additionally, practice करना जरूरी है इसको, practice नहीं करोगे तो नहीं होगा. Type yes if you are getting this. Yes, only एक दो yes. Some more yes please. Okay, repeat again. Some more. Anyone else? इसको repeat करते हैं. So what I have done is एक नया example ले लेंगे. ये हो गया. Okay, this the revision has been done. Okay, so let's create one more example and उसके साथ सीखेंगे. So let me create a class. Class equals to career. Okay, class equals to career. Now I want to. Okay, now I will create a uh, constructor. So first will be init. Init init इस तरीके से लिखा जाता है. Then I will say self comma एक रहेगा stream. Stream का spelling कैसे रहेगा? Stream. और the another variable I am saying location. ठीक है, लोकेशन का. देन इसके अंदर आई एम सेइंग कि सेल्फ डॉट स्ट्रीम. देखो जो भी वेरिएबल रहेगा उसको सेल्फ डॉट स्ट्रीम इक्वल्स टू स्ट्रीम एंड सेल्फ डॉट लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन. ठीक है, उसके बाद आई विल क्रिएट अ यूटिलिटी फंक्शन. ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन में आई एम जस्ट सेइंग कि डेफ डिस्प्ले इक्वल्स, डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं जो भी है, डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो नाउ आई एम सेइंग प्रिंट करियर स्ट्रीम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट स्ट्रीम, ये वाला. ठीक है, लोकेशन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट लोकेशन. ठीक है, तो ये मेरा क्लास हो गया है. सो नाउ दिस इज माय एंटायर, लाइक जिसको लाइक से जो 10th 12th के स्टूडेंट्स रहते हैं. ठीक है, so they are very concerned with what is the career stream आगे जाके, है ना, career stream. So career stream can be डॉक्टर बन सकते हैं, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्या बनना है, और आर्टिस्टिक होते हैं जैसे पेंटर एंड बहुत सारी चीजें, राइट. देन समवन वांट्स टू बी पायलट, तो उसके बाद 10th के बाद 12th के बाद दे कैन बी अ पायलट ऑल्सो. Then multiple options are there. ठीक है, so that, so let's say if I say career one equals to, so this is an object. ठीक है, this is an object. So
सॉफ्टवेयर की जगह आई विल से डॉक्टर. ठीक है. So someone is becoming a doctor in a Pune location. ठीक है. So I've just added stream and location, right? And then I have created this C2 is equals to career. Career क्या रहेगा? आपका this class रहेगा. And I'm adding engineering. Someone wants to become an engineer, right? Someone wants to become teacher. दिल्ली में बनना है इनको. Someone wants to become a scientist in Bangalore. Okay. So basically, these are the variables, and I'm just creating different variables here. Okay. Different variables and different location. So location कह दिया, I can pass here anything by the way. Okay. But string this is a location. We are just passing like meaningfully, mindfully location only. ठीक है. ये लिखने की जरूरत नहीं है. You can also do it. Of course, ये लिखने की जरूरत नहीं होती. These are comments. Simple. Okay. So now if I run this, so this has been run. अभी ये data store हो चुका है. C1 object में this data has been stored. C2 object में this data has been stored. C3 object में this data has been stored. C4 में ये. So now if I call this, so अभी मुझे check करना है कि जो C1 career option है dot display मैंने कह दिया. ठीक है. Display का this method I have called. Okay. This method I have called for C1. तो कॉल कैसे लगेगा? कॉल लगेगा C1. C1 will be this, then it will go to career, that is this. Okay, and then it will go to this display. Okay, and it will use these variables, right? ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, right? So now if I run this display, so what I will get, I will get these information. Career stream is equals to doctor, career location is equals to Pune. Okay. Similarly, if I say C2 dot display, right? C2 dot display का कैसे कॉल लगेगा? This C2 will go here, right? It will go, then it will go to career, and then it will go to that display method, right? और display method में जो भी data रहेगा, like this career stream, career location, तो इस बार हमें मिलेगा engineer and Mumbai. If I run this, I should get career stream equals to engineer and career location equals to Mumbai. Okay. So this is the way, this is also another way you can access some data through directly a class. Okay, through directly a class. If this is clear, type again yes, or you can go ahead. Okay, yes, okay, cool. So now let's start with today's class. So ये revision में काफी time चला गया. So need to you need to practice this home. Okay. So let's start with inheritance. So very first topic of today is inheritance. Inheritance. Inheritance सीखने के लिए we have to come to the drawing board. Okay. We have to come to the drawing board. Mark it. Okay. mark it आ जाओ. आ गया. So we'll say rotate. And we'll say full screen. And this. Okay. So in order to understand the inheritance, right? In order to understand, okay, what happened? Okay. In order to understand inheritance, इसको चले जाओ, चले जाओ. In order to understand inheritance, अरे इसको और छोटा करना है. The word suggests कि सब कुछ तो inherited हो रहा है. Inherited क्या होता है? जैसे मराठी में इसको वारसा कहा जाता है. वारसा, वारसा. ठीक है.
So there can be, let's say, a parent. ठीक है, parent होता है, एक parent रहेगा, and then he will have some children. ठीक है, some children. तो एक children, एक बच्चा हो गया, ये second बच्चा हो गया, ठीक है, third बच्चा हो गया. So he is a parent. These are child. These are children. Okay, these are children. So, for example, parent had some properties. Properties. Properties यानी मतलब I was talking about qualities. ठीक है, क्वालिटीज कह लो या लिटरली प्रॉपर्टी कह लो. प्रॉपर्टी यानी है ना, पैसा या जमीन. ठीक है, जमीन. So let's say parent have 100 acres of जमीन. ठीक है, 100 acres of land. ठीक है, 100 acres of land. And these children, इनके जो बच्चों को like 20 years down the line, इनको है इनहेरिट, इनके पास है each each child has 10 lakh rupees. ठीक है, each child has 10 lakh rupees. या पकड़ लो इनके पास अभी के लिए एक ही बच्चा है. ठीक है, पकड़ लो इनके पास अभी के लिए एक ही बच्चा है और उस बच्चे के पास 10 लाख रुपए है. So now considering, now this child, इसका एक्चुअली नेटवर्थ कितना रहेगा गाइस? इसका एक्चुअल नेटवर्थ रहेगा 100 acres लैंड प्लस 10 लाख रुपीज. ठीक है, ये इसका नेटवर्थ रहेगा, नेटवर्थ रहेगा. एंड इस पैरेंट का नेटवर्थ कितना रहेगा? ओनली 100 acres. ठीक है, इसका जो भी, इस लैंड का जो भी कीमत रहेगा उतना. ठीक है, जो भी कीमत रहेगा उतना. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? So basically, what we are trying to understand. So there can be two classes. Let's say there can be, let's say I'm creating a class equals to parent. ठीक है, there can be two classes. ठीक है, इस parent के अंदर I will say the init, init गलत लिख दिया मैंने. I will say in it. ठीक है, I will say self. I will say property. ठीक है, I will say property. And I will say self dot property equals to property. And then I will say this def डिस्प्ले कह लो, कोई भी कह लो, लेकिन डिस्प्ले अभी के लिए करते हैं. एंड आई एम सेइंग सेल्फ इक्वल्स टू, आई विल से प्रिंट माय एंटायर प्रॉपर्टी, माय एंटायर प्रॉपर्टी. ठीक है, इस तरीके से हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे. एंड देन देयर विल बी अ चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास में क्या रहेगा? वी विल क्रिएट लाइक दिस क्लास चाइल्ड, और इस चाइल्ड को हम यहाँ पर ऐसे ही रखता हूँ. आई विल ऑल्सो क्रिएट डेफ, और ये सिमिलर ये सारी चीजें, डेल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इक्वल्स टू प्रॉपर्टी. एंड आई विल क्रिएट दिस डिस्प्ले, जिसमें डेफ डिस्प्ले. ठीक है, इसके अंदर आई विल ऑल्सो पास डिस्प्ले 2 कर देता हूँ. ठीक है, एंड आई विल से प्रिंट माय प्रॉपर्टी. ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसे. बट हियर इन ऑर्डर टू मेक दिस क्लास अ पेरेंट, एंड इसको चाइल्ड अगर मुझे बनाना है, तो आई विल हैव टू राइट हियर in the argument parent. ठीक है, parent. So what will happen now guys, कि इस child class में इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी. ठीक है, इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी. मीनिंग you can access any of these functions using this child function, child class, using this child class. Okay, and this parent cannot able to access. ठीक है, cannot able to access. ये कर सकता है, पेरेंट नहीं कर सकता. ठीक है, so let's try to understand this using this what we can call code interpreter. ठीक है, तो कैसे रहेगा, मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ. सबसे क्लास, let's say I'm saying parent. Okay, parent. Then I am just directly, it's simple. Sorry, taking loading.
and I'm just saying okay, एक init हो गया हमारा, and then I will display def display, and I will say self, okay? या फिर एक सिंपल क्लास बनाता हूँ, आई डोंट वांट टू सिंपल क्लास बनाता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट सिंपली से प्रिंट, ये है, दिस इज पेरेंट क्लास, ठीक है, दिस इज पेरेंट क्लास। ये ऑटो सेविंग बंद करना होगा, दिस इज पेरेंट क्लास। इसको बाद में ही देखूंगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर दिस चाइल्ड क्लास, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली एक क्लास रहेगा पेरेंट क्लास, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, यूटिलिटी रहेगी, और एक चाइल्ड क्लास रहेगा, उसके अंदर ये पेरेंट का रेफरेंस रहेगा, ठीक है। दिस पेरेंट का रेफरेंस यहाँ पर आना जरूरी है, देन ओनली दिस बिकम्स अ चाइल्ड क्लास, ठीक है, देन ओनली दिस बिकम्स अ चाइल्ड क्लास। तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट अगेन, इस पेरेंट चाइल्ड में ही खेलेंगे, देन आगे आगे जाकर क्या करेंगे, विल ट्राई टू understand this everything using some real life scenarios, ठीक है। So first I will create again parent class, okay, parent class, and I am saying for example this is going here, and I will say that display parent display, ठीक है। So this is entirely a parent class। कैसे लिखा है मैंने, सेल्फ एक parent class क्रिएट करा, उसके अंदर I have created this init function, and then I need to add this name here, name। इस नेम को ऐसे भी पास कर सकते हैं या डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ठीक है, नेम लाइक दिस, नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। आई हैव सेड init function self name equals to name, ठीक है, and then I have just added this parent constructor। उसके बाद I have said I have created another function which is called display self parent display, ठीक है, और I can say this is parent class, this is parent class, okay, this is parent class। तो मैंने चला दिया, then I have created another class that is a child class, ठीक है, child class में I have taken a reference of parent, ठीक है। उसके बाद I have created another constructor that is self init, self में name and age ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, self में name and age ऐड कर दिया, और इसको मैं अभी के लिए नॉर्मल रखता हूँ, ये सुपर हो या ये पेरेंट हो, ये अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सब कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये चीजों को अभी मत सोचो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर वे, बट इसको इसको समझो, ये हमने अभी तक सीखा है, क्या सीखा है, सेल्फ डॉट नेम, ये नेम वाला, सेल्फ एज डॉट एज, ये एज वाला, ठीक है। आई एम सेइंग दिस इज चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड इसमें आई एम राइटिंग अ यूटिलिटी फंक्शन, किसमें, चाइल्ड क्लास। आई एम राइटिंग यूटिलिटी फंक्शन दैट इज डिस्प्ले, उसके अंदर आई एम सेइंग दिस इज अ चाइल्ड क्लास, जैसे दिस इज अ पेरेंट क्लास, राइट। आई एम सेइंग प्रिंट नेम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एज, ठीक है। ये समझ में आया है किसी को, लाइक समझ में आया कि ये क्लास कैसे क्रिएट, इफ यस टाइप
क्लियर गई, अगर क्लियर हुआ है तो क्लियर कर, ओके यस भी करेगा, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हाउ आई हैव रिटर्न दिस। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें करोगे। क्लास लिख रहा हूँ, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर तैयार कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर तैयार करने के लिए वॉट एवर द वेरिएबल नेम इज वो यूज कर रहा हूँ। अगर वेरिएबल नेम की जरूरत नहीं तो आई विल नॉट क्रिएट दिस। और इसके अंदर बस मैंने एक डिस्प्ले नाम से एक मेथड लिखा है। ठीक है, इस डिस्प्ले को क्या करता हूँ मैं, पेरेंट डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, पेरेंट 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 डिस्प्ले नाम से लिखता हूँ, इसको मैं चाइल्ड डिस्प्ले नाम से, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, चाइल्ड डिस्प्ले। ठीक है, तो मैंने बस कहा यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, सेल्फ डॉट नेम, और सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, समझ में आ रहा है किसको, क्लियर? यस क्लियर। अदर ऑल्सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, इफ नो यू कैन से नो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा आगे का क्लिक फायदा ही नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, विल ट्राई नॉट टू गो अहेड, ये बहुत कम स्पीड में सिखा रहे हैं हम, सो दैट you don't miss what you are teaching, what you are trying to learn. Okay, so now going ahead, since no another responses. All right, so we have created this parent class and we have created this child class, और हमने कहा कि this child class has control, has all the uh, you know like इस बच्चे ने इसके पापा की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेट कर दी है। व्हाट यूजुअली हैपेंस कि एक फादर है, ठीक है, फादर है, ही इज अ क्रिकेटर। ठीक है, ही इज अ क्रिकेटर, क्रिकेटर की स्पेलिंग समझ लेना ऐसी होती है। ठीक है, और ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो नाउ ही इज व्हाट ही इज, ये फुटबॉलर है। ठीक है, फुटबॉलर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये फुटबॉलर है, तो व्हाट विल हैपन, ये एक नेचुरल क्रिकेटर भी रह सकता है बिकॉज इसके फादर से इसको वो प्रॉपर्टीज मिलेगी। सो नाउ ही इज अ फुटबॉलर प्लस क्रिकेटर। ठीक है, ही इज अ फुटबॉलर प्लस क्रिकेटर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये फुटबॉलर भी बन सकता है, क्रिकेटर भी बन सकता है, इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज है। इट इज डिराइविंग दीज इनहेरिटेंट क्वालिटीज इन हिम। ठीक है, ये चाइल्ड है, क्योंकि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। ठीक है, सो नाउ कंसिडर दिस, दिस इज अ पेरेंट। ठीक है, दिस इज अ पेरेंट, पेरेंट डिस्प्ले में आई एम सेइंग आई एम क्रिकेटर, cricket player. ठीक है, आई एम क्रिकेट प्लेयर एंड आई एम हियर सेइंग आई एम फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, वो सेम एग्जांपल लेते हैं। अगेन आई हैव रन दिस, सो अभी देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस क्लास फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा कि पेरेंट डॉट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने सचिन नाम दे दिया। ठीक है, पेरेंट डॉट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको मैं लाइक सिंपली पी नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, पी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पेरेंट का, और उसके अंदर सचिन पास कर दिया। किसका नाम है ये नाम है दिस वन, पेरेंट का नाम। एंड इफ आई से पी डॉट पेरेंट डिस्प्ले, ठीक है, पी डॉट पेरेंट डिस्प्ले क्या हो गया, पी डॉट पेरेंट डिस्प्ले, ये if I run this I will get I am a cricketer। ठीक है, और you can see this has automatically run। ठीक है, इसको बुलाया भी नहीं, we have not called this but this has automatically run like this, parent constructor, and dot the final output we got from this display is I am cricketer। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डिस्प्ले कर कमेंट आउट कर दूँ इसको पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, रनिंग दिस, if I run this I will get what, I am a cricketer, what this। So now another thing, और यहाँ पर ही करते हैं, if I say child equals to child dot age, and if I say c dot, like ये क्या है, इसमें name and age चाहिए, right? Times I have created a object called c, उसमें child and रोहित उस बच्चे का नाम डाल दिया, उसका एज डाल दिया, 30 थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको अपन 18 कर देते हैं। ठीक है,
So if I run this now, you can see ये क्रिकेटर वाला इसका आउटपुट है, राइट? तो नाउ यू कैन सी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चल गया, दिस वन चल गया। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, रन करना पड़ेगा लेकिन अभी ये चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चल गया। So now we got this output. कि I am a footballer. My name is Rohit. My age is 18. ठीक है, My name is Rohit. My name is 18. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि चाइल्ड चाइल्ड ये एक क्लास है अलग, ये एक क्लास है अलग। ठीक है, इसको बुलाने से ये चीजें मिल जाएगी, इसको बुलाने से ये चीजें मिल जाएगी। बट इज इट पॉसिबल if I call this child function, will I get this information? Right? Will I get this information? Since this is child, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर सारी इसकी खूबियां है, इसकी प्रॉपर्टीज है, so it is possible. So now if I say c dot parent display, ठीक है, c dot parent क्या कहा मैंने, चाइल्ड डॉट पेरेंट डिस्प्ले, कि चाइल्ड के अंदर की जो भी पेरेंट की खूबियां है, दिस इज अ पेरेंट, राइट? पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो भी पेरेंट की खूबियां है वो दिखा दो, तो दिस इज द खूबी, राइट? So if I say c dot parent display, if I say, देखो we can access this, and we are getting this response also, कि I am a cricketer, right? I am a cricketer. So basically अब पेरेंट फंक्शन यूज करके आप पेरेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन चाइल्ड का फंक्शन यूज करके यू कैन गेट अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑल्सो, पेरेंट डिस्प्ले ऑल्सो। ही इज ऑल्सो फुटबॉलर, ही इज ऑल्सो क्रिकेटर। ओके, बट लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू ये जो पेरेंट डॉट चाइल्ड डिस्प्ले क्या आ सकता है क्या? ठीक है, मैंने कहा कि पेरेंट पेरेंट से ये चाइल्ड वाला मुझे इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, मैंने चाइल्ड से ये पेरेंट वाला कर दिया। ठीक है, तो व्हाट आई हैव गॉट, सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। बट व्हाट आई विल गेट, पेरेंट से मैं चाइल्ड ले सकता हूँ क्या? द ऑब्वियस आंसर इज नो, बट लेट्स ट्राई टू सी। ठीक है, व्हाट आई हैव सेड, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ये है, पेरेंट डॉट ए चाइल्ड डिस्प्ले, इफ आई रन दिस आई विल गेट एन एरर। ठीक है, आई विल गेट एन एरर। So basically you cannot do it. Okay, you cannot do it. Okay, so I'm just keeping this here for you to understand. यहाँ पर ये notes भी आ चुके हैं, this will raise an error, parent does not have a child display method. ठीक है, कुछ इस तरीके से। Okay, everyone getting this? This is the this is the this is the inherit, इसको कहेंगे simple inheritance। ठीक है, if you are getting this, टाइप कर दो yes। ठीक है, yes। Some more? Anyone else? Yes. Cool. Anyone else? इसको और स्लाइट अंडरस्टैंडिंग में, स्लाइट मिसिंग। ठीक है, इसका क्या है, लाइक हम जो भी सीख रहे हैं अभी तक, उसके ऊपर हम टॉप अप करते जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न प्रीवियसली। ठीक है, तो वो छूटते जाएगा। ठीक है, छूटते जाएगा। सो यू नीड टू रिवाइज। If you are failing to understand, तो ये चीजें हम फिर से ले लेंगे। नो वरी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है, आई थिंक इट इज अबाउट टाइम, बट ही इज अ पेरेंट, और इस पेरेंट की सारी खूबियां इस बच्चे के अंदर रहेगी, बट ये इसकी अंदर की खूबियां इस पेरेंट के पास नहीं रहेगी। ठीक है, वी कैन नॉट कॉल दिस पेरेंट यूजिंग दिस पेरेंट this child's utility function or function. Although you can call this parents functions, इसके अंदर कितने भी रहने दो, using this class function, child function, but provided that ये class का जो parent का reference है इस child के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, इस child के अंदर रहना चाहिए। Let me just give you some more examples। एक एग्जांपल लेते हैं एंड क्लोज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। Hmm,
लेट्स से आपके पास है लेट्स यू हैव दिस क्या क्रिएट करेगा। So I'm creating a function called name. ठीक है, एक नेम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेम से मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। So basically, let's say I have a big like a small class जिसमें मेरे पास है स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट डेंट नेम, स्टूडेंट इन्फो है पकड़ में। ठीक है, स्टूडेंट का इन्फो है। एंड एक मेरा दूसरा क्लास है, वो सिर्फ नेम से है। ठीक है, नेम से। इस स्टूडेंट के इन्फो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इस नेम में सिर्फ नेम है। जैसे इसमें एज है, जैसे एज 13 है। देन इसके अंदर फॉर एग्जांपल लोकेशन है, इसके अंदर मार्क्स है। ठीक है, कुछ भी पकड़ लो। और ये जो नेम है, आई वांट टू टेक इट फ्रॉम दिस क्लास। नाउ दिस देयर आर टू क्लासेस, एक है इन्फो, एक है नेम। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए नेम क्लास से। कौन सी? एक नेम नाम से मिसिंग इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। So first I have created a class. First I have created a class, that is class name is name itself. And I have created a constructor that is def init. उसमें मैं जो भी नेम डालूंगा स्टूडेंट का, that will be there. I have created this instance. ठीक है, instance variable, so that I can use the name anywhere. ठीक है, and I am creating some value also. Let's say def student name. ठीक है, and I am saying self. उसके बाद I am just printing out student name is whatever the name that you pass. ठीक है, whatever the name that you pass. If I simply run this, और इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि name equals to name dot ravi, I am saying नेम इक्वल्स टू ये नेम, देन रवि स्टूडेंट का नाम पास कर दिया, देन उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके स्टूडेंट नेम ये वाला फंक्शन चला दिया। तो व्हाट आई विल गेट, स्टूडेंट नेम इज रवि, राइट? स्टूडेंट नेम इज रवि। सो नाउ आई वांट टू क्रिएट ए चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, तो उसमें मैं कहूंगा लेट्स से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जिसके अंदर आई हैव सेड ऑल दिस थिंग्स। क्या क्या कहा मैंने कि एक कंस्ट्रक्टर दैट आई हैव क्रिएटेड, उसमें आई हैव एडेड नेम एंड एज, then I have created this instance variable, yeah, and then I have created this another function called student information. उसके अंदर I have said student name is equal to self dot name, student age equal to self dot age. ठीक है, ठीक है। So similarly यहाँ पर if I say s equals to एस, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के क्लास का नाम डाल दिया। ठीक है, मैं सेड रवि, रवि की जगह मैं कह देता हूँ कवि। ठीक है, कवि कवि कर दिया इस नेम को, एंड एज मैंने 20 दे दी। इफ आई रन दिस स्टूडेंट इन्फो, व्हाट आई विल गेट, स्टूडेंट नेम इज रवि, स्टूडेंट एज इज 20। ठीक है, दिस ओके, दिस इज क्लियर। ठीक है, दिस इज क्लियर। टाइप यस इन द कमेंट गाइस इफ दिस इज क्लियर। So now I am saying, I am saying, this is clear, right? Yes, yes, yes. So here in the student information, I am just passing this name as a reference. ठीक है, this name as a reference. जब भी मैं इस एक दूसरे क्लास का रेफरेंस एक दूसरे क्लास में डाल दूंगा, so now the story has changed. So this is a parent, this is a child function. So basically now I can access this also. Okay, now I can access this also. So if I simply say s dot student name information की जगह I want to say student name.
ठीक है, स्टूडेंट नेम. So if I run this, student output has not student name. अरे इसको रन नहीं किया है. So now if I run this, I will get name as कवि. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कवि डाला, इससे स्टूडेंट नेम एज कवि आ गया. ठीक है, बट आई हैव यूज्ड दिस मेथड स्टूडेंट नेम. ठीक है, कैसे यूज करा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड ये मेथड मैंने यूज कर ली. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी एस डॉट स्टूडेंट नेम. एस क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, which is what a child class. चाइल्ड क्लास से आई हैव एक्सेस ए पेरेंट क्लास का ये मेथड. ठीक है, पेरेंट क्लास का ये मेथड. तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. तो अभी ना ये कुछ चीज आती है, सुपर डॉट इनिट डॉट नेम एंड सुपर पेरेंट डॉट इनिट डॉट नेम. तो ये चीजें हम कल सीखेंगे, जिसमें जिसमें लाइक दीज आर आल्सो काइंड ऑफ अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर कह लो, या फिर भी एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह इस वेरिएबल को चेंज कर देगा. So let's learn those things tomorrow. So let me just give you some theory here. So what is inheritance? So inheritance is basically basically it allows it allows a class to it allows the class to inherit from multiple classes or from parent class. ठीक है, so it allows इसको child class कर देते हैं. It allows a child class to inherit from a parent class. ठीक है, इतनी चीज अभी हमने सीख ली. ठीक है, इतनी चीज अभी हमने सीख ली. Then there are types of, ठीक है, types of inheritance. ठीक है, so the first is simple inheritance. ठीक है, first is simple inheritance. तो जिसमें a child class inherits from a parent class. ठीक है, जो हमने सीख लिया है यार. ठीक है, so this is the whatever we have done is called as simple inheritance. Then there is this multiple inheritance where a child class inherits from multiple parents. ठीक है, एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ. So let's say there are one parent, two parent. ठीक है, and then there is a one single child. तो इसकी भी इंफॉर्मेशन एक सिंगल चाइल्ड ले सकता है. जैसे ही इज अ क्रिकेटर, ठीक है, एंड ही इज अ सिंगर. ठीक है, ही इज अ सिंगर एंड ही हिमसेल्फ इज अ डांसर. ठीक है, ही हिमसेल्फ इज अ डांसर. तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ही विल बी ए क्रिकेटर ऑल्सो, ही विल बी ए डांसर ऑल्सो, ही विल बी ए सिंगर ऑल्सो. ठीक है, द चाइल्ड. तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. उसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम कर लेंगे. देन देयर इज दिस मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल क्या होता है, एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ. So multiple means there is let's say grandpa, then there is a parent, then there is a child. Okay. तो grandpa के कुछ फीचर पेरेंट के अंदर रहेंगे, पेरेंट के कुछ फीचर चाइल्ड के अंदर रहेंगे, एंड ऑल्सो इनके फीचर भी इसके अंदर रहेंगे. ठीक है, so this is called as multi level. ये मल्टी लेवल हो गया, राइट. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसको भी अच्छे से सीखेंगे. एंड देन देयर इज दिस हायरार्किकल मतलब समझ में क्या आ रहा है कि लेट्स से देयर इज दिस पेरेंट, देन उसके अंदर दिस चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, देन उसके अंदर फॉर एग्जांपल सुपर चाइल्ड सुपर चाइल्ड सुपर चाइल्ड. ठीक है, कुछ इस तरीके से हायरार्किकल. ये बहुत और भी लंबा हो सकता है. देन सुपर चाइल्ड सुपर चाइल्ड सुपर चाइल्ड. ठीक है, इस तरीके से हो सकता है. फिर यहाँ से ये भी जा सकता है कि इनको ज्यादा हो गया, देन यहाँ से ये जा सकता है, देन यहाँ से ये जा सकता है. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी हायरार्किकल इंस्टेंस इनहेरिटेंस. ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस. So all these things that you guys need. So we will learn in the inheritance learning. ठीक है, तो क्या क्या सीखा आज हमने सिर्फ सीखा सिंपल इनहेरिटेंस.
सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है? अ चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है? अ चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, वी हैव सीन दिस इज अ पेरेंट क्लास जिसके अंदर देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, देयर इज सम, ये पेरेंट क्रिकेटर था, राइट? एंड देन देयर इज दिस चाइल्ड क्लास, इस ये चाइल्ड क्या था? फुटबॉलर था। सो व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस, तो सबसे पहले हमने कहा कि डिस्प्ले कर दो पेरेंट्स को, तो पेरेंट वाज अ क्रिकेटर। देन वी सेड डिस्प्ले कर दो चाइल्ड को, तो चाइल्ड वाज अ फुटबॉलर। देन वी आल्सो सेड कि पेरेंट सॉरी चाइल्ड डॉट पेरेंट को डिस्प्ले कर दो, सो वी गॉट अ क्रिकेटर आल्सो। सो अ चाइल्ड वाज अ क्रिकेटर आल्सो, ठीक है? चाइल्ड वाज अ क्रिकेटर आल्सो। So this was it, and this is called as simple inheritance. Simple inheritance में क्या होता है? Then there is only a parent, there is only a child, ठीक है? And ये बस इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, ये ये पेरेंट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है? डीप लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपन ये सेशंस, ठीक है? देन दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें मैंने एक स्टूडेंट नेम से एक क्लास जनरेट करा, एंड देन देयर इज दिस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से, तो वी कैन एक्सेस सिंस नाउ दिस इज अ चाइल्ड क्लास, अभी ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, so we can access using this class this this method, ठीक है? ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ से ये मेथड हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? इतना ही है, ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट गाइस, ठीक है? तो क्या ये समझा है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? लाइक यस गाइस, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, लाइक यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, cool, yes, yes, everyone, those who are watching on YouTube also, type yes in the comments, guys. Type yes in the comments. Okay. So the same thing, एक quickly बता देता हूँ जो है how to access the notes, ठीक है? So I will push this notes on this GitHub library. So इसका link description में भी मिल जाएगा, and I will share it on the group also, ठीक है? तो what you have to do is जैसे ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ये क्लासेस है, उप्स इस फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो दिस इज डे 1, दिस इज डे 2, ठीक है? तो आज का जो भी रहेगा, कल का जो भी रहेगा इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस नोट, ठीक है? इसको समझना है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूट्यूब पे आपको कुछ यहाँ पर उनके वीडियोस भी है, ठीक है? वीडियोस भी है, इसको 2x पे चला दो, ठीक है? इसको 2x पे चला दो, and try to understand, try to learn this. We can go through each and every note, ठीक है? We can go through each and every notes, and इसको ऐसे समझ लो, अच्छा ये है, हर एक सेल को रन करने की कोशिश करो, इसको और एक गूगल कोलैब से भी रन कर सकते हैं, तो गूगल कोलैब, तो कुछ ऐसे चले जाओ गूगल कोलैब में, एंड यू कैन कॉपी ईच एंड एवरी सेल, कुछ इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है? एंड यहाँ पर जो भी सेल रहेगी इसका भी मैं डाल देता हूँ, अभी के लिए कुछ इशू हो रहा है, बट यू कैन गो ऑन गूगल कोलैब एंड यू कैन रन ऑल दिस सेल्स, ठीक है? खुद ट्राई करके देखो, हर एक चीज, हर एक सेल रन करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? यू विल ट्राई टू गेट दीज थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट, और जिसको ग्रुप को ज्वाइन करना है, so there are these posts, ठीक है? If you I'm posting the notes there, if you want to join the group you can click on this link, this is invite link for very short period time, जो हमारे इस ग्रुप में आ जाएंगे, and where we will we post updates there also, ठीक है? So that is all about today. If you understood this, type win in the comments, win in the comments. If you have understood all these things, type win in the comments. Cool, there is one winner. तो ये विन क्यों लिखता हूँ मैं, राइट? क्योंकि विन क्यों पूछता हूँ, क्योंकि वी स्टार्ट विथ अ विन, और दिन में हमें विन्स, विन्स यानी रिवॉर्ड्स हमें लेते जाना है। तो दिस इज इन द मॉर्निंग वेरी फर्स्ट, हमें हमें एक विन मिल चुका है, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड अ डे विथ अ विनर, एंड होल डे
ऐसे ही विन विन कलेक्ट करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। सो बाय बाय, टेक केयर,